StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू StudyIQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं यूपीएससी सीएसई 2021 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 43 हासिल करने वाले शुभम शुक्ला जी। वेलकम सर टू StudyIQ and lots of congratulations. Thank you, Divyanshi, for your wishes and really pleased to be here. सर 4 अटेम्प्ट की आपकी जर्नी रही है एंड फाइनली जब रिजल्ट है यू हैव अकम्प्लिश्ड व्हाट यू हैव ड्रीम्ड ऑफ. How is the feeling? It's satisfaction, relief. It's relief. Like the immediate reaction was a moment of relief. जब क्योंकि 4-5 साल की मेहनत, it flashes in front of your eyes and then like your eyes get a little moist, थोड़ा आंसू आ जाते हैं and then it's more of a relief. It is happiness, but philosophical sense से बोला तो क्या पता relief is also a form of a happiness. So it's been a very great feeling. तो यही है, मतलब बहुत खुश हूँ, elated हूँ, यही है. अब जैसे हमने अभी आपने मेंशन किया कि रिलीफ है और ये जो 4 साल की जर्नी है दैट्स गोइंग टू बी कल्मिनेटेड कि अब एक आईएएस ऑफिसर आप बनने वाले हैं. सो अब जब वो जर्नी देखते हैं एज एन एस्पिरेंट लाइफ एंड नाउ व्हेन यू लुक फॉरवर्ड टू द लाइफ दैट्स कमिंग, तो हाउ डू यू सी चेंजेस इन योरसेल्फ, चेंजेस दैट्स गोइंग टू कम? लाइक आई एम ऑफ द ओपिनियन, जितना मुझे पता है एंड जितना मुझे मेरे सीनियर से पता चला है कि थिंग्स वोंट गेट इजी, यू विल गेट टफ. ठीक है, तो इट्स लाइक कि आप एग्जाम प्रिपरेशन फेज में हो, यू आर इन द cocoon, यू आर इन द प्रॉब्लम द बेस्ट एनवायरनमेंट्स, और इफ नॉट इन द बेस्ट एनवायरनमेंट देन इन अ डिसेंट एनवायरनमेंट जहां से प्रिपेयर कर रहे हो. थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट आउट देयर. इट विल बी रियल वर्ल्ड, रियल प्रॉब्लम्स एंड रियल पीपल, एंड उनसे डील करने के लिए बुकिश नॉलेज वोंट बी एग्जैक्टली हेल्पिंग यू. एंड एट द सेम टाइम you have to be very cautious and careful about whatever you do, because like this exam का ऐसा होता है कि it gives you celebrity status, और एक बार वो आता है then there'll be a lot of eyes on you as well. So you'll have to carry on as a conduct like deemed worthy of an IAS officer. तो यही है, बहुत कुछ सीखने का प्रोसेस अभी, लर्निंग एंड अनलर्निंग एंड रीलर्निंग का प्रोसेस चल रहा है काफी ज्यादा. जैसे मैं इसलिए मेंशन करी कि 4 अटेम्प्ट की जर्नी है बिकॉज इस एग्जामिनेशन में सस्टेन करने के लिए यू नीड टू हैव अ रियल मोटिवेशन फॉर द एग्जामिनेशन. आप बिट्स पिलानी से आपने अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद यू आर आल्सो वर्किंग फॉर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट. उसके व्हाट वाज एक्चुअली द मोटिवेशन, द ड्राइविंग फोर्स दैट केप्ट यू इन द जर्नी? बिकॉज हम जैसे कहते हैं यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, यू कैन एक्सपेक्ट कि पहले अटेम्प्ट में हो जाए, उसके बाद फिर अगर दूसरे साइकिल में जाना हुआ, तीसरे साइकिल में जाना हुआ, तो इट रियली नीड्स कि रियल मोटिवेशन रहे. तो व्हाट वाज योर मोटिवेशन, ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस एग्जामिनेशन? Okay, so no, like if I go as far as 2015, तो उस समय भी like getting into the UPSC or preparing for this examination wasn't something जो मेरे दिमाग में था. तो a life-changing experience happened when I joined NSS Brits Pilani chapter, and like I come from a metropolitan city like कोलकाता, जहाँ पे probably best amenities हैं, सब कुछ best available है, facilities, basic facilities से लेके advanced facilities, and compared to that जब हम लोग NSS में local पिलानी के villages में जाते थे on हरियाणा राजस्थान border, तो this goes back to 2016 के आसपास. तो facilities were not even close to what I had in Kolkata, and the people were living a bare minimum level of existence, and it was a very different India that I saw, an India that I felt probably needed people like us, young people like us working for them. And यहीं पे मुझे लगा कि जितना मैं उन लोगों के लिए as a good engineer कर सकता हूँ, उतना उससे better I could do as a good administrator, and this was what kept driving me. Like हर बार मेंस क्लियर नहीं होता था, like मैं हर तो 3-4 दिन रोना धोना करता था, क्या कर रहा हूँ मैं जीवन के साथ, ये सब वो सब मुझे भी जाना चाहिए. But then after a few days, like वो images, like it used to keep striking my head कि ये है नहीं, ये करना है नहीं, वो करना है. So this was something that used to bring me back to the UPSC prep, and finally 4 साल बाद चलो relief है, but then एक excitement भी है कि वैसे हैमलेट्स के लिए, वैसे गाँव के लिए और कुछ करने के लिए मौका मिल रहा है. तो it's a relief as well as in like we're looking forward to it as well. सर जब जर्नी शुरू हुई तो कहते हैं यूपीएससी को समझना बहुत जरूरी है, यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछती हैं उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करें. तो आपका जो पहला कदम इस एग्जामिनेशन में था वो क्या था? आई रिमेम्बर अ कॉलेज सीनियर, उनकी भी कुछ साल पहले अच्छी रैंक आई थी, उन्होंने एक टॉपर स्टॉक दिया था हमारे कॉलेज में. उन्होंने एक चीज बताई थी, the U in UPSC stands for unpredictable.
यू कैनॉट प्रेडिक्ट क्या होने वाला है. वॉट यू कैन डू योर बेस्ट इज प्रिपेयर योरसेल्फ जिस हद तक पॉसिबल है. तो मैं स्टार्ट में यही किया, सिलेबस देखा था, जो ऑप्शनल के लिस्ट है सब देखे थे, टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा देखी थी, उनके वीडियोस, उनके ब्लॉग्स पढ़े थे, बिग बुक लिस्ट टाइप का टेंटेटिव बुक लिस्ट बनाने का ट्राई किया, डूज एंड डोंट्स फॉलो करने का ट्राई किया. ऑप्शनल में ऑल्दो थोड़ा जज्बाती होकर ऑप्शनल ले लिया, बट देन दिस इज समथिंग दैट आई very much advise against भी being sentimental होके ऑप्शनल लेना. So this was something that I looked a lot into, but फिर भी despite looking a lot, I like took a wrong decision. But this is something that I have been doing, like referring to toppers a lot. Even in this attempt, we'll be talking about it a little later as well. So toppers को मैंने बहुत ज़्यादा refer किया है. So this was something that I kick-started my preparation with. So I think जो नए aspirants हैं, they look forward to your talks and they will start the preparation and formulate the strategy. Hopefully I'm able to guide them well, and hopefully मैं उन लोग को वो मिस्टेक्स बता पाऊँ जो मैंने की थी और वो ना कर पाए, so that बोलते हैं ना cutting the curve short, वो हो पाए इनसे. So this is about this though. So I think let's get to the point and cut the curve short. आपने अभी जैसे बोला जो गलतियां अवॉइड करनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बिकॉज अगर हम एक नॉर्मल मेथडोलॉजी की बात करें तो दे शॉर्ट आउट द बुक्स, दे सी द सिलेबस, दे सी द PYQs, बट स्टिल जो परसेप्शन है यूपीएससी का, व्हाट आर द क्वेश्चंस, एनालिसिस, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती है. एंड इफ दैट इज डन करेक्टली, यूपीएससी जर्नी बिकम्स शॉर्ट. To a very fair extent, very true. So, like, if you're asking me about the mistakes that I have made, there are many mistakes that I have made, and which I do not want the upcoming aspirants to do. Because क्यों ही करना है? Like, learn from some others' mistakes. So the biggest mistake that I made was choosing a very wrong optional. Like, chemistry faculty था मैं, and I was like कि चलो chemistry बच्चों को पढ़ा रहा है तो UPSC भी पढ़ा देंगे chemistry. And then it was a nightmare. तो जज्बाती होके, sentimental होके, you do not have to choose an optional. So remember, sentimentals are always fools. ठीक है, तो sentimental होके option नहीं चुना है. Choose your optional based on research. Proper digging करो. There are a lot of content available on YouTube and online. उसके बाद ही go for an optional, because an optional is something that will make or break chances for you. So it is very critical, and you'll remember this in the due course of time. Second major mistake that I made, or that I did not actually make, but I would advise aspirants against making it, is referring to too many books for a single source, for a single subject. For example, पॉलिटी में कोई डीडी बसु पढ़ रहा है, एनसीईआरटी पढ़ रहा है, लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है, नोट्स भी पढ़ रहा है. नहीं, इतना नहीं करना है. रिवाइज नहीं कर पाओगे, और रिविजन का गेम है ये, पूरा एग्जाम रिविजन का खेल है, रिविजन प्रैक्टिस. इसीलिए कीप योर सोर्स लिमिटेड, मैक्सिमम 2 सोर्सेज पर सब्जेक्ट अदर देन योर ऑप्शनल. मैक्सिमम उन्हीं को पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए. थर्ड वुड बी अगेन lack of revision and answer writing. So this happened in my initial couple of attempts, and lack of answer writing was as recent as my third attempt. So this was something that I worked on in my fourth attempt, and it has paid result. Fourth major mistake that I made was not referring to toppers copies. Toppers copies is a sitting invisible gold mine. It's sitting आपके आंखें से सामने, आपको दिखेगा नहीं, but it's a gold mine. I mean, couple of years down the line, अगर कोई बंदा बोले कि मैंने टॉपर्स की कॉपीज पढ़ के ही प्रिपेयर किया है, तो I wouldn't be surprised. I would absolutely not be surprised. But वही है, people choose to ignore it. So वही है कि make it a habit of reading toppers copy. And last major mistake that I made was, at times I used to have this feeling that probably like होता है ना, especially after like when you are not able to clear successive attempts, and then doubt creeps in you. Am I worthy enough? Never question yourself. I mean, if you want to question yourself, how can I be better? Never question yourself if I'm good or not. You are good. There's no criteria which tells you that you're not good. So this is something that I had this question in my mind sometimes, but then I used to try my best to get out of it. I think this is a very different insights ही आपने भी जो present किया कि toppers copy is a gold mine, and you have to refer them, because एक जो कहते हैं ना clear understanding about किस तरीके से answers हैं and what is the actual demand, because they are already at that place, they've understood the concepts and they are putting it in the copies. थोड़ा सा आगे चलती हूँ, और जो भी एस्पिरेंट्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम मिनिमम रिसोर्सेज की बात करते हैं, बट स्टिल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टिक टू द मिनिमम रिसोर्सेज. कभी कोई कह सकता है कि लक्ष्मीकांत इज ओनली फॉर प्रीलिम्स,
आपको डीडी बसु भी पढ़नी है, सुभाष कश्यप भी पढ़नी है, तो किस तरीके से अपने आप को कंसोलिडेटेड रखे रिसोर्सेज के साथ, कॉन्फिडेंट रहे एंड आगे बढ़े? सी वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो फोमो होता है, इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट. लाइक अगर आप 3 बुक्स पढ़ोगे फिर भी आपको लगेगा यार एक और पढ़ लेते हैं, इससे भी कुछ आ सकता है. तो देयर इज नो क्योर टू दिस. इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि यार 1 या 2 रिसोर्सेज रेफर करो, बस करो आप. उन्हीं को बार बार रिवाइज करो. कुछ क्वेश्चन अगर उससे आएगा तो बहुत वेल एंड गुड. इफ नॉट, कुछ अगर बाहर से आता है आपके लिए, तो भाई यू हैव द बेसिक्स डन, कंसेप्ट क्लियर है आपके, यू कैन राइट आंसर. यही है मतलब. और ये दिस इज अ वेरी फ्लॉड कंसेप्ट कि प्रीलिम्स का अलग पढ़ना है, मेंस का अलग पढ़ना है. बहुत हद तक इंटीग्रेटेड पढ़ना होता है. It's just that the nature of examination is different. Prelims में there'll be an answer in front of you, you have to pick it. Mains में you have to write in detail. तो ये बहुत गलत concept है कि prelims के लिए पढ़ो, mains के लिए पढ़ो. This trend is something that I have personally avoided and it has personally worked for me. और जैसे हम कहते हैं कि स्टार्टिंग से इंटीग्रेटेड स्टडीज रखो, प्रीलिम्स और मेंस, व्हाट इज दैट? It's like कि जब आप पढ़ रहे हो, you are studying a subject, you study it for the knowledge, study it for the content. You do not study it to clear prelims or clear mains. You actually study it because आपको समझना है. Right? If you want to understand what the problems of the institution of governor are, you need to understand the institution of governor itself. प्री में हो सकता है कुछ फैक्चुअल, कुछ आइडिया बेस्ड क्वेश्चन आ जाए. मेंस में आपको कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप का आ जाए. सो वंस यू डन विद द बेसिक्स, यू हैव दिस एबिलिटी टू राइट. तो यही आपको करना है. दिस इज द इंटीग्रेटेड स्टडी, लाइक नॉट स्टडिंग इन साइलोज. इट्स लाइक कि आपको मेंस का अलग, प्री का अलग नहीं पढ़ना है. हाँ, जैसे सम सब्जेक्ट जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो एथिक्स, जो डायरेक्टली प्री के सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है, यू कैन पुश इट दैट फॉर लेटर. उसके लिए आप इन साइलोस पढ़ सकते हो, कुछ पढ़ना ही पड़ेगा. राइट. बट देन ओवरऑल अगर आप पॉलिटी और ज्योग्राफी या हिस्ट्री आप ऐसा कर रहे हो कि मैं प्री के लिए अलग पढ़ूंगा, मेन के लिए अलग, मेंस के लिए अलग स्ट्रेटेजी रखूंगा, दिस इज समथिंग दैट आई वुड पर्सनली एडवाइज अगेंस्ट. सो नाउ आई थिंक मैं करंट अफेयर्स की भी थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि कितने साल का करंट अफेयर्स करना है एग्जामिनेशन से पहले, क्योंकि ये भी अगर 1-2 क्वेश्चंस 4-5 साल पहले के आ जाते हैं तो पीपल जस्ट गो बिहाइंड कि 4 साल पहले का आ गया, 2018 का क्वेश्चन आ गया है, तो हाउ टू कवर. बट थिंकिंग ऑल्सो फैक्ट इट्स नॉट फीजिबल टू कवर द करंट अफेयर्स ऑफ 4 years पीछे का. ट्रू. मतलब it's not humanly possible कि you go back 4 years and then the newspapers पढ़ो, ये पढ़ो, रिटेन कर पाओ, रिवाइज कर पाओ, अप्लाई कर पाओ. इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. एंड अगर कॉस्ट बेनिफिट हिसाब से देखें तो 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत पुराने करंट अफेयर्स न्यूज से होते हैं, बट एंड विच इज समथिंग जो कॉमन सेंस से भी अप्लाई करके यूज कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं. सो पर्सनली आई वुड से एटलीस्ट 1 year. अपर लिमिट में नहीं बोलूंगा, बट 1 साल भी अगर करके जा रहे तो यू हैव अ वेरी गुड स्टैंडिंग. अब अगर उनको मन करिए 2012 का पूछने का, तो भाई अब 2012 तो नहीं जा पाओगे. यही दिक्कत है. देयर इज ऑलवेज, यही याद रखना है कि यू इन यूपीएससी स्टैंड्स फॉर अनप्रेडिक्टेबल. यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट्स व्हाट इट्स गोना डू नेक्स्ट ईयर, बट अपने आप को इतना लेवल पे तैयार रख देना है कि इफ कम व्हाट में, आई विल हैव एन आंसर टू इट. यही है. तो 1 year वुड बी गुड. लाइक लेट्स से May 28 को नेक्स्ट एग्जाम है, तो फ्रॉम May to May या फिर April 2022 to May 2022 23, सॉरी. तो ये इतना कर सकते हैं. दिस इज समथिंग दैट वुड बी अ फीजिबल टाइम. When a student is new in the preparation, 1-1.5 साल का समय है एग्जामिनेशन के लिए, न्यूज़पेपर एक्चुअली कब पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना है ताकि जो फैक्ट्स हैं उसको हम प्रीलिम्स के लिए निचोड़ सकें और जो मेंस के लिए फॉर्डर भी निकल सके? Okay, so before I start answering this question, I'll put a disclaimer. I was someone who was never regular into reading newspapers. मतलब मान लो अगर आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, शायद परसों ना पढ़ूं. This was an habit with me, because नहीं हो पाता था उतना frequently. तो whatever I'm saying is comes from my seniors, जिन्होंने बोला है कि as bureaucrats, make newspaper reading a part of your daily schedule. As aspirants, probably not on that great depth, but then as bureaucrats, you will be needing newspapers, so you have to focus on it. So an ideal combination मैं क्या बोलूंगा would be one good newspaper, either of the two, Hindi or Indian Express, whichever suits you, and the other would be a coaching monthly compilation type. इसका combination रखो. It should be decent to a very fair extent. एंड वही अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो भाई बहुत कुछ आपको नहीं पढ़ना है. स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है कि ये स्टॉक इतना ऊपर नीचे जा रहा है. पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे को क्या बोल रही है उससे नहीं जानना है. पॉलिसीज, हाईलाइट्स, प्रोग्राम्स, स्कीम्स, समथिंग इनोवेटिव इन न्यूज, कुछ साइंस एंड टेक का आ गया. स्पोर्ट पे नहीं करना है कि आपको कि भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 2 मेडल लगा है. इट्स नॉट रेलेवेंट. बट लेट्स से कुछ ऐसा, लेट्स से सम न्यू स्पोर्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन सम सॉर्ट ऑफ इवेंट,
या फिर कोई रूल चेंज हो गया DRS VRS का, तो वो सब आप देख सकते हो। तो दिस इज व्हाट, मतलब कि इट्स मोर अबाउट ओपिनियंस, फैक्ट, एडिटोरियल्स एंड अनदर थिंग दैट आपको पढ़ना चाहिए। बट इफ देयर इज एन एडिटोरियल, कुछ जैसे कुछ न्यूज़पेपर्स में लाइक देयर इज एन एडिटोरियल ऑन आर्टिकल, ऑन एडिटोरियल पेज में आर्टिकल होता है लेट्स से तवा भिंडी मसाला इस करके, या फिर तवा भिंडी मसाला रिप्रेजेंटिंग समथिंग। तो इतना सिलोगिज्म और इस टाइप में क्वेश्चंस में अगर आप नहीं भी जाओगे तो नॉट एन इशू, बट बेसिक इश्यूज अंडरस्टैंड करने के लिए योर एडिटोरियल्स इज अ वेरी गुड सोर्स। तो वही है कि आपको न्यूज़पेपर बहुत सिलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा, यू डू नॉट हैव टू रीड एवरीथिंग अंडर द सन। सर बट जैसे जो भी नए एस्पिरेंट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, बट स्टिल टू गेट द हाइलाइट्स की हो क्या रहा है, दे हैव टू रेफर द न्यूज़पेपर। सो इस सिचुएशन में थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस आता है कि कॉन्सेप्ट्स तो पता नहीं है, हाउ वी विल स्टडी द कीवर्ड्स दैट आर कमिंग। तो ऐसे में किस तरीके से परसीव करना है जो भी न्यूज़ पीस है? ओके, गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड। सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक लेट्स से यू कम अक्रॉस सम वर्ड दैट यू आर अनअवेयर ऑफ, ये हम लोग भी करते हैं। लाइक इफ देयर इज समथिंग दैट आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ, सिंपल गूगल पे सर्च करो, एंड एज यूपीएससी एस्पिरेंट्स आप सिंपल वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से यू डू नॉट नो अबाउट स्टैगफ्लेशन, हो सकता है, तो आप सिंपल सर्च करो स्टैगफ्लेशन यूपीएससी, तो कोई ना कोई यूपीएससी कोचिंग ने उस स्टैगफ्लेशन पे एक आर्टिकल लिख दिया होगा जिससे स्टैगफ्लेशन पे पीपल कैन हैव टॉक्ड अबाउट एंड एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। लेट्स से यू आर स्टक इन सम कीवर्ड्स, तो इधर उसी समय आप गूगल सर्च कर सकते हो, नहीं तो यू गेट एन आइडिया कि क्या चल रहा है न्यूज में, और फिर बाद में फ्री टाइम में आप खाते खाते गूगल सर्च कर लो, एक आर्टिकल देख लो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एक आर्टिकल या फिर एक नोट टाइप का। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू अबाउट इट, गूगल इज अ वेरी गुड सोर्स। So now I'm coming to mains answer writing, और mains answer writing के जो dimensions हैं, that needs to be very clear कि किस तरीके से लिखना है, because क्या structure है वो तो पता है, intro, body, conclusion, but what should come in intro, what should come in body, and what should come in conclusion, that should match the demand of the question, not what we know from the topic. तो I think अगर आप उसके बारे में बता सके। तो बिफोर वी स्टार्ट ऑन हाउ टू स्ट्रक्चर क्वेश्चन, दो चीजों पे ध्यान देनी है। फर्स्ट इज द डायरेक्टिव वर्ड, एग्जामिन, critically examine, discuss, evaluate. So this, all these of these have different meanings. Figure out करिए इसका क्या meaning हो रहा है. Second, the keywords about the question itself. What the question core idea क्या है? What is the core thing that they are trying to ask? You do these two things, your 50% of the work on research is done. Probably 70%. तो जब आप introduction start करते हो, तो introduction will give you an opening about the theme, give some data to correlate or supplement the fact that you have opened, or some statistics or some committee or whatever. बॉडी में जब आप आओगे तो बॉडी विल बी द कोर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। उसमें आपको यही करना है कि लेट्स से 10 मार्क क्वेश्चन यूजुअली हैज 2 पार्ट, तो आपको अपने बॉडी को 2 पार्ट में स्ट्रक्चर करना है। 15 मार्क्स में 3 पार्ट्स होते हैं, तो यू हैव टू स्ट्रक्चर योर बॉडी इनटू 3 पार्ट। कोर आइडियाज को एड्रेस करिए, मूव ऑन टू कंक्लूजन। कंक्लूजन में यू गिव एन ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग और यू इवैल्यूएट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। बट यूजुअली मैं रिकमेंड करूंगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू मस्ट हैव अ वेरी गुड एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। तो बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक व्हाइल यू राइट, give a futuristic view, give a solution suggestive view. Like for example, let's say we are unable to beat poverty. Poverty, let's say the poverty rates are rising. It's an hypothetical situation. So a good conclusion would be that India has always managed to beat ahead of the curve in poverty. We have managed to lift 271 million people out of poverty in the last decade. Then there is no reason why we cannot repeat or even better this trend in the coming years. This is a very good conclusion on of a question on poverty or why India is not able to manage poverty well. ये बहुत अच्छा conclusion. And again एक ये भी advice रहेगा कि जो key topics हैं आपके mains के उसमें prepare an introduction and a conclusion. Even if not in full introduction conclusion, prepare some keywords. It will save you a lot of time. सर आपने चारों ही अटेम्प्ट में हर बार आपने मेंस लिखा है, व्हाट वाज डिफरेंट दिस टाइम? डिफरेंट दिस टाइम, ओके। फर्स्ट ऑप्शनल पे बहुत ज्यादा फोकस किया था इस बार मैंने, बिकॉज ऑप्शनल में मेरे नंबर कम आ रहे थे। हिस्टोरिकली तीनों अटेम्प्ट्स में कम आए हैं। दिस टाइम समथिंग वही टारगेट था कि एटलीस्ट एवरेज स्कोर पे लाना है, जो एवरेज स्कोर पे आ भी गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आंसर राइटिंग में मैंने बहुत वर्क किया था इस बार। आई डिड नॉट राइट टू मेनी टेस्ट। लाइक बहुत सारे टॉपर्स 34-35 टेस्ट लिखते हैं, मैंने 7 या 8 टेस्ट मैक्सिमम लिखे होंगे। 3-4 प्री के जस्ट आसपास या पहले, और 3-4 जस्ट प्री के मेंस, मतलब प्री के बाद। मतलब मुझे एक्जैक्टली टाइम बैंड भी याद नहीं, बट 4 बस पक्का आफ्टर प्री। आंसर राइटिंग में भी आई ट्राइड ऑन ब्यूटिफाइंग माई आंसर, बिकॉज 3 अटेम्प्ट आप दे देते हो, यू हैव द कंटेंट रेडी, यू कैन राइट, यू जस्ट हैव टू ब्यूटिफाई योर आंसर। तो फैक्ट्स, फिगर्स, डायग्राम्स, अंडरलाइन करना, कुछ स्टैटिस्टिक्स देना, कुछ रिपोर्ट्स, कमिटीज, आर्टिकल्स, एग्जाम्पल्स, ये सब देना। दिस इज समथिंग दैट आई फोकस वेरी हेवीली दिस टाइम। फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स अगर मैंने बोल दिया है तो
And lastly, the third most important thing I did was filling up pages and completing the paper. एक क्वेश्चन भी खाली नहीं छोड़ना मेरा टारगेट था, which for my GS I did it very well. एक भी क्वेश्चन नहीं पता है, I'll take some words out of the question जिस बारे में मुझे आइडिया है, and I'll write on it. But I won't leave a question. नहीं भाई डायग्राम बना के आ जाऊंगा, कुछ नहीं, एक आधा नंबर तो मिलेगा. वो फाइट एक आधे नंबर के लिए ही है पर क्वेश्चन, बिकॉज एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर, 75-78 क्वेश्चन के लिए 75 to 78 मार्क्स. और एक मार्क्स पे याद, आपको यही स्टूडेंट्स को याद रखना है कि एक रेंज आता है जहाँ पे एक मार्क्स पे 8 लोगों के वो आते हैं, सर्विसेज स्किप होने लग जाती है एक मार्क्स पे. तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज समथिंग दैट आई इम्प्लीमेंटेड इट दिस टाइम अराउंड. आई थिंक ये वैल्यू एडिशन की जो बातें हैं, अंडरलाइनिंग्स, मेकिंग डायग्राम, फ्लो चार्ट से इम्पोर्टेंट है. You have changed it optional. Earlier it was chemistry to political science and international relations. What would you suggest for everybody who is not getting to the mains कि कौन से स्टेज पे अगर नहीं हो रहा है तो ऑप्शनल चेंज करने पर भी विचार कर सकते हैं? Like the biggest factor for me was कि मेरे marks improve नहीं हो रहे थे. Like I have no shame in revealing my marks. Chemistry में first time मैंने first attempt दिया था mains 2018 में, उसमें मेरे आए थे 500 में 142. सेकेंड टाइम मैंने बहुत मेहनत की सब्जेक्ट के ऊपर, मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़े, इट बिकेम 142 से 150. मतलब इट्स आयरॉनिकल कि बहुत मेहनत के बाद ही 8 नंबर मेरे मार्क्स बढ़े. एंड आई रियलाइज कि भाई इस सब ऑप्शन का इतिश्री करने का टाइम आ गया, बिकॉज इस ऑप्शन के साथ क्लियर नहीं होने वाला है डिस्पाइट द मेहनत दैट आई डू. दिस इज समथिंग दैट यू कैन लुक आउट फॉर. इट इज एन इंडिकेटर यू माइट, अगर आपके मार्क्स अपने मॉक्स में या फिर मेन्स में कंस्टेंट रह रहे, फिक्स रह रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं और कम रेंज में नहीं बढ़ रहे हैं, लेट्स से 240s में नहीं बढ़ना, इज समथिंग दैट isn't a cause of bother. You are in the zone. 140s में नहीं बढ़ना, it's like कि भाई बदलो. So this is another important factor. Another important factor must be कि आप पढ़ रहे हो and you're not getting comfortable, आप answers ठीक से नहीं कर पा रहे despite all your effort. You have the concepts ready but you are unable to answer. तो एक हद तक help लो, talk to people, talk to teachers, get your answers evaluated, get valuation, work on them. फिर भी अगर नहीं हो रहा है, that is also another indicator कि भाई इस ऑप्शन को भी थोड़ा त्यागने का टाइम आ. So these are the two key reasons, मतलब why, when and why an option should be changed, in my opinion. तो थोड़ा सा आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी कि कैसा था, बिकॉज फॉर एवरीबडी जो भी यूपीएससी से कनेक्टेड हैं वो जानना चाहते हैं कि यूपीएससी इंटरव्यू में क्या होता है एंड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड एस्पिरेंट वहां पे बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती हैं कि आप यूपीएससी बोर्ड के सामने हैं, ऑल्सो यू हैव टू परफॉर्म योर बेस्ट, आपको ऑफिसर बनना है, ये लास्ट लेवल है, बहुत सारी चीजें चलती हैं. और इन सभी चीजों के बीच में एक और होता है कि यू हैव टू परफॉर्म वेल एंड आंसर क्वेश्चंस टू द बेस्ट एबिलिटी. तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कैसे टैकल किया, अगर एक आध क्वेश्चन हमारे साथ शेयर कर सकें, एंड व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड व्हेन यू वर आंसरिंग द क्वेश्चंस देयर? Interview stage is probably the most fun stage of the preparation, but at the same time लोगों के इतने ज्यादा scared, मतलब they are so scared of this towards the, like towards the fagging end of the cycle and almost 2/3 of the candidates getting filtered out, कि people are not able to enjoy this. This was something that I did. मुझे पता था कि वो बोलते हैं ना कि यार 4 अटेम्प्ट हो गए, चौथा अटेम्प्ट में फंसा हुआ नहीं निकल रहा है, इस बार भी ज्यादा से क्या हुआ, नहीं निकलेगा, तो ये बोलते हैं ना मरे को क्या मारोगे, मेरा वैसा हालत था. तो मैं बस इंजॉय करता था इंटरव्यू को. मैंने इस बार 22-23 के आसपास इंटरव्यूज दिए हैं, मॉक इंटरव्यूज, इसीलिए बिकॉज कि मुझे मॉक इंटरव्यूज देने में मजा आता है. सुबह कोट पहनो, कॉल करो और पहुंच जाओ मॉक इंटरव्यू देने. एंड यूपीएससी इंटरव्यू, टू बी ऑनेस्ट, इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट 20-25 minutes or 30 minutes of your life facing an interview, because unlike जो मॉक्स आपके चल रहे थे जहाँ पे आपको प्रेशर पे डाला जाता है, यूपीएससी इंटरव्यूज आर वेरी काम, चिल, कूल टाइप के. they'll try your best to cover almost every dimension. It might not be true, it might not be calm, chill, or it might not be the key सबके लिए सब कुछ पूछा गया. मेरे लिए they covered a lot of dimensions. They asked me about my college, about NSS, then a few questions on international relations, few other questions on general topics like road accidents, disaster management. Then I had a research paper in my college days, उस पे question हुए थे. And Six Sigma पे, which was again in my research paper, में thesis and research paper के domain में, so this was also asked. So overall it was a complete interview, which areas में ज़्यादा question पूछते हैं, कुछ में कम पूछते हैं, but then a very pleasant and a very warm experience being interviewed by people जिनका public service में experience is almost 5 to 10 years more than your age. So it's like a very wonderful experience. बहुत बहुत ज़्यादा मजा आया था personally मुझे. कुछ
कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए थे, इफ यू कैन शेयर द क्वेश्चन विद अस और उसको किस तरीके से आपने टैकल किया, बिकॉज हमेशा एक रहता है कि बैलेंस्ड अप्रोच देना है, बट वहां पे हो सकता है कई बार बोर्ड बोर्ड टेस्ट यू अ लिटिल मोर और आपका जो स्टैंड है वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाता है, तो हाउ टू बी फर्म इन दैट? So I remember being asked by a lady member कि let's say you are made the DM of a disaster affected district, या ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे बहुत डिजास्टर्स होते हैं, तो what would be your approach? एक सिचुएशन दे दिया मुझे, I had to work. So I asked for a permission for a couple of seconds to think about it. तो उस पीरियड में I used a logical frame कि ऐसे ऐसे प्रोसीड करना है, 5 पॉइंट बोल दो काफी है. My first option, as far as my memory goes, this is what I answered. My first option was, ma'am, the first thing that I'll do is I'll try to understand the problems of that place, the nature of disasters, create a committee having different stakeholders and ask them to submit a report within a month or two. The second option would be based on the committee. I would be sending the report to my superiors and requesting additional relief or resources in advance. Third would be the preparatory phase wherein the locals would be involved and local administration, the local people would be involved in disaster management preparation. And fourth would be the stage wherein local solutions would be tackled. And I gave an example of that जो साउथ बिहार में वाटर ड्राउट स्कैर्सिटी प्रॉब्लम था, देन दे यूज दैट आहार पाइन मॉडल, मैंने उसका एग्जांपल दिया. एंड फिफ्थ स्टेज वुड बी अ थॉरो रिव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर सिस्टम्स with a special focus on adaptation and mitigation policies. And a report of this would be periodically be sent over to my superiors and to the government in the center or in the state. This was my approach. मैंने sequentially मतलब कि bottom से पहले समझने problem समझने की कोशिश किया, because as a bureaucrat you're not expected to make radical changes. And this is what I thought कि if I go about this way, so this is something that will help me. तो छोटे छोटे चेंजेस पहले समझो, सिचुएशन पे कमिटी बनाओ, उसके बाद रिपोर्ट्स भेजो, बोलते हैं रिक्विजिशन भेजो क्या है. तो दिस इज व्हाट आई फेल्ट वर्कड फॉर मी एज वेल. दिस वाज अ मेजर बोलते गेम चेंजर टाइप का आंसर था, बिकॉज पैनल लुक वेरी सर्टिफाइड, वी वर स्माइलिंग एंड एवरीथिंग, एक दूसरे को देख के नॉड कर रहे थे. तो So how StudyIQ has been part of your journey? To be very honest, I did not refer to it much for the UPSC prep. But RBI के टाइम में, like a friend of mine उन्होंने StudyIQ skill through, मतलब like we had this RBI prep going on, and then current affairs and everything में थोड़ा StudyIQ ने as in help किया था. But I and a friend of mine shared some test series also for RBI, either for RBI or for some other exam. Session के end में सर कुछ final tips suggestions अभी aspirants के लिए? Couple of tips. Number one, take very good care of yourself, physical as well as your mental health. Do not shy away from asking for help, and remember that you're not alone. You're not something that is to be worth, and one exam or one sheet of paper cannot decide your worth. Keep this in mind. Second, treat UPSC Civil Services as just as an examination. Do not make it a matter of life and death. Exam की तरह treat करो and it'll treat you back as a human. Third, do not repeat the mistakes that I've made. I have mentioned it in the video. Be better. ठीक है. Fourth, practice करो. It's not that you have to be dedicated. It's that you have to be dedicated. It's not that you have to give 18 hours a day. 6 dedicated hours is better than 18 hours of like wasteful studying. And lastly, have faith in yourself, your books, your parents, your God. जब टाइम, जब बोलते हैं ना कि जब किसी किस्मत में जब टाइम आता है तो उसे वो मिलेगा ही. किसी को फर्स्ट में मिलता है, किसी को फोर्थ में मिलता है, किसी को 7th 8th 9th में मिलता है, बट मिलेगा. डोंट वरी अबाउट दिस. आपकी किस्मत में जो है आपको मिलेगा. लेट्स होप आपको आपकी किस्मत में ये हो. And this is what all my suggestion would be to the student. Thank you so much, sir, for these valuable advice. And for everybody, this is just another examination, not a matter of your life and death. And इस ये examination काफी demanding है, इसलिए आपको you have to prepare, but अपने mental health का भी ध्यान देना, because that's equally very important. Thank you so much, sir, for joining us in this interview session. पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. Thank you. StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.